Hello everyone, how are you all? I hope fine. So today in this video we are going to have discussion on multiple choice questions of the subject Transfer of Property Act 1882. I have covered up some MCQs related to this subject along with their explanation. You people should yourself test and score yourself when you will be doing the MCQs of this topic of this subject. ठीक है, और साथ साथ अपने आप को भी स्कोर करते रहो और खुद भी प्रैक्टिस करते रहो कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है. Prefer bear act also along with you when I will be doing the questions of this subject. ठीक है, starting with question number 1. Now dealing with question number 1. See question number 1, what it says? It says which one of the following section of the Transfer of Property Act 1882 deals with the direction for accumulation? Option A, section 14. Option B, section 17. Option C, section 19. Option D, section 18. So what is the correct answer? Which one of the following section of the TPA, that is Transfer of Property Act 1882, it deals with the direction for accumulation? So what is the correct answer? C. Provision related to direction for accumulation has been provided under section, which section? Under section 17 of Transfer of Property Act 1882. So correct answer is B. Okay, section 17 के अंदर provision दिया गया है which is related to direction for accumulation. It has been provided under section 17 of Transfer of Property Act 1882. तभी बोल रही हूँ, साथ में बेयर एक्ट पकड़ के देखो, relate करते जाओ. Now question number 2, what it says? It says that transfer of ownership of immovable property in exchange for a price paid or promised, or partly paid or partly promised, is called as option A, mortgage, option B, lease, option C, sale, option D is exchange. आप बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? Transfer of ownership of immovable property in exchange for a price paid. What it says? In exchange of a price paid or partly paid or partly promised is called what? See, आप लोगों को अगर पता होगा, आप लोगों ने ढंग से एक एक की डेफिनेशन पढ़ी है, मॉर्टगेज की पढ़ी है, सेल की पढ़ी है, तो आप पता चल जाएगा आपको कि what is the correct answer of this question. It is very much easy. So correct answer of this question is वैसे सेल. ठीक है, इसको हम सेल कहते हैं. आप लोगों को कौन सा सेक्शन प्रेफर करना है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सेक्शन 54 ऑफ टीपीए. आप लोग सेक्शन 54 देखो टीपीए का, वो बात करता है, इट सेज दैट सेल क्या है? वो बोलता है कि सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड or promise or part paid or part promised, that is the sale. So question 2 ka correct answer is the sale is the correct option here. Transfer of ownership of immovable property in exchange for a price paid or promised or partly paid or partly promised is called what? It is called as sale. So that is the correct answer, option C. Now question number 3, it says Section 56 of the Transfer of Property Act 1882, it deals with what? Option A, marshalling by subsequent purchaser. Option B, contract for sale. Option C, discharge of encumbrance on sale. Option D, none of the above. So what is the correct answer of this question? सिंपल सा है, सेक्शन 56 खोलो, उसके अंदर डायरेक्ट लिखा गया है कि इट डील्स विद द मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर. दिस वाज द डायरेक्ट क्वेश्चन. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. सेक्शन 56, सेक्शन 54 फॉर सेल, सेक्शन 17 क्या बोलता है? आप लोग इन क्वेश्चंस को ढंग से देखो और इन सेक्शंस को प्रेफर करो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what it says? It says
if the donee dies before the acceptance of the gift is option A voidable, option B illegal, option C valid, option D void. बताओ मुझे क्या आंसर है इसका. If donee जो है he dies before the acceptance of the gift is either void or voidable or illegal, या valid है या फिर void है. बताओ क्या आंसर करेक्ट है इसका. इसके लिए आपको कौन सा सेक्शन प्रेफर करना है? टेल मी बिलो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो नाउ. इफ नॉट नाउ टेल मी, अगर आप बाद में देखोगे कभी तब बता देना कि कौन सा सेक्शन प्रेफर है. आई विल बी डायरेक्टली टेलिंग यू द आंसर हियर. It is very, very, very much important question. See, if the donee dies before the acceptance of the gift, then that gift is void. Tell me, कौन से सेक्शन की लास्ट लाइन बोलती है about this? कि if donee dies before the acceptance of the gift, then the gift is void. Tell me, it will be very much important. It is very much important question and very much interesting to know about this. Now, question number 5, it says, Chapter 7 of the Transfer of Property Act 1882 does not apply to transfer of property under option A Christian law, option B Parsi law, option C Mohammedan law, option D Hindu law. So chapter 7 जो है Transfer of Property Act का, it does not apply to transfer of property under chapter 7 of TPA. Open your bare act and बताइए मुझे. देखो क्या है इसका करेक्ट आंसर. सी एज पर सेक्शन 129, कौन सा सेक्शन? 129 ऑफ टीपीए. I will write the section also. 129 of Transfer of Property Act 1882. It says that nothing in this chapter relates to gifts of movable property made in contempt of death or shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law. It's also a very direct question and very much easy law. आपको पता चल गया होगा चैप्टर 7 के जो आपको सेक्शन 129 है उसके अंदर जो लाइन दी गई है आप लोग रीड करिए उसको. बोला है कि नथिंग इन दिस चैप्टर रिलेट, नथिंग इन दिस चैप्टर यानी कि चैप्टर दिस वन, ठीक है, रिलेट्स टू गिफ्ट ऑफ movable property made in contempt of death or shall be deemed to affect any rule of Mohammedan law. So it does not. So chapter 7 of TPA does not apply to transfer of property under Mohammedan law. C is the correct answer here. ठीक है, ये भी काफी इजी था, आपको पता होना चाहिए ये वाला सेक्शन भी. इन सेक्शन से ही क्वेश्चन बनता है तो बेरक तो पढ़ना बनता है. Question number 6 is, we find the incorrect option answer from the following. So which is the incorrect option from the following? Option A, gift is the transfer of property. Option number A says that gift is the transfer of ownership without consideration. Option B, gift should be accepted during the lifetime of the owner. Option C, if the donee dies before the acceptance, the gift is void. Option D, gift may be made only of movable property. So what is the correct option here? See, as per section 122 of TPA, whenever I am saying TPA, mind that is Transfer of Property Act, okay? It should be well known by you people. So 122 of Transfer of Property Act says that gift is the transfer of certain existing movable property made voluntarily and without consideration by one person to another. तो ऑप्शन ए
क्या बोलता है यहाँ पे कि गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन. Gift should be accepted during the lifetime of the owner. Yes, if the donee dies before acceptance, the gift is void. Of course, I have told you above also, if the donee dies before acceptance of the gift is void. Option A is also correct. Option D बोलता है कि gift may be made only of movable property. So for this option, particular option is wrong. D is the incorrect option here. ठीक है, बिकॉज आपको इसके लिए 122 प्रेफर करना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो बोलता है कि गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंटरी एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन टू द अनदर पर्सन. सो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन हियर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. It says the transfer of property act 1882 came into force on. So that this is a very much direct question. I know, I think that everyone know the answer of this question, that the transfer of property act came into force on 1st July 1882. ठीक है, option B is the correct answer. That is very much direct. Question number 8. It says that according to section 5 of the Transfer of Property Act 1882, the term living person includes what? इससे पहले आप लोग मुझे बताओ, आईपीसी, इफ यू पीपल हैव स्टडीड प्रॉपर्ली, देन यू पीपल वुड बी नोइंग दैट द पर्सन की डेफिनेशन, पर्सन जो आप वर्ड देख रहे हो यहाँ पे लिविंग पर्सन, इसमें से आप पर्सन की डेफिनेशन मुझे बताओ. आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है पर्सन? यस, ओ आई कांट हियर यू. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर the correct section for the definition of person is आईपीसी के सेक्शन 11 के अंदर पर्सन डिफाइंड है. उसके अकॉर्डिंग पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस विद वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. दैट इज द सेक्शन 11 के अंदर डेफिनेशन, राइट? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन सेक्शन 11 के अंदर आईपीसी के. इफ यू पीपल रिमेंबर इट, यू शुड नो दिस. कम ऑन, सेक्शन 11 के अंदर पर्सन डिफाइंड था, है. You should know this. Now, what question 8 says? Question 8 बोलता है, according to section 5 of Transfer of Property Act, the term living person includes a human being only. No. Option B, only important company association. No. Option C, company or association or body of individuals. Yes. So section 5 का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर लिविंग पर्सन इंक्लूड्स अ कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, द लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी. आप लोग को रिलेट कर सकते हो आईपीसी की डेफिनेशन के साथ इसे, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप पढ़ रहे हो तो आप लोग मेरा डेफिनेटली उसी की प्रेफर करना, बट पर्सन को आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ हमने आईपीसी में ये पढ़ी थी इस पर्टिकुलर पर्सन की डेफिनेशन, सेक्शन 11. प्रोसीडिंग फर्दर, नाउ dealing with question number 9, it says that which one of the following condition is invalid according to section 10 of Transfer of Property Act? Option A, condition not to sell outside the family. Option B, a condition not to sell during the lifetime of the transferor. So for this section question, you prefer section 10 of Transfer of Property Act 1882. और अगर आपको interpretation आ गया तो you people can easily identify that option B is the correct answer over here. B is the correct option of question number 9. Question 10 says that which one of the following is not an essential condition of section 43 of 18 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ये भी डायरेक्ट है अगर आपको पता है. ऑप्शन ए, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट नेसेसरली बी फ्रॉड्यूलेंट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है. आप लोग इंटरप्रिटेशन खुद करिए, ओपन योर बेयर एक्ट और देखो उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ सेक्शन 43. रिमाइंड दैट और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को करो. क्वेश्चन 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. It says that once a mortgage, always a mortgage means. आपको mortgage की definition पता होगी.
कौन से सेक्शन के अंदर मॉर्टगेज डिफाइंड है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882? मॉर्टगेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 58 ऑफ टीपीए. ठीक है, सेक्शन 58 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का, वो डिफाइन करता है मॉर्टगेज को. वो बोलता है वंस अ मॉर्टगेज ऑलवेज अ मॉर्टगेज. What does it mean? So option A, whether it is mortgage has no right to assign right of redemption to any person. Option B, mortgage has no right to assign the that to any other person. Option C, option D. So क्या बताइए आप कौन सा आंसर सही है यहाँ पे? डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट. अगर आपको पता होगा, बुक पढ़ी होगी अच्छे से तो बता दोगे. So correct answer over here is mortgage is always redeemable. D is the correct answer. और ये mortgage defined कहाँ है TPA के अंदर? You should know this question, answer of this question. Okay. Now question number 12. It says that section 122 of Transfer of Property Act 1882 deals with which of the following kinds of gift, namely option A, gift inter-vivos, option B, gift morichius causa, option C, gift by will, option D, all of the above. So what is the correct option of question number 12? Section 122 of Transfer of Property Act deals with which following kind of gift. So the option, correct option is option A, direct hai ye bhi, gift inter-vivos. See, gift inter-vivos is a gratuitous transfer of ownership between the two living person and is a transfer of property within the meaning of section 5 of Transfer of Property Act. Gift may be either inter-vivos or it may be testamentary. You better know that. So option A is the correct option here. Now, which of the following question number 13, it says that which one of the following sections provide the statutory duties of mortgage in possession. So ये भी डायरेक्ट है, आपको पता होगा इसका आंसर. तो कौन सा सेक्शन डील करता है इसके ऊपर? Which section provides the statutory duty of a mortgage in possession? That is section 76 of Transfer of Property Act 1882. It provides the statutory duties of a mortgage in possession. So 13 is D is the correct option of question 13. Question 14 says that the provision relating to onerous gift have been provided under Transfer of Property Act 1882 in which section? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन. देखो अगर आपको सेक्शंस पता है ना, यू कैन डू एनी क्वेश्चन इजीली ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या किसी भी लॉ के सब्जेक्ट का. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हियर? टेल मी पीपल. So what is this happening? So what is the correct option of question number 14? It is section 127 of Transfer of Property Act provides the provisions relating to onerous gift. ठीक है, the question option A is the correct here. Section 127 of TPA provides provisions relating to onerous gift has been given under this particular section. So this is very much easy. आप लोगों को पता होगा. Now question 6. Now this question says that section 52 of the Transfer of Property Act 1882 does not apply to option A, post transfer rights, option B, pecuniary rights, option C, pre-existing rights, option D, instant right. So what is the correct option here? So the correct option of this particular question is section 52 of the TPA, that is Transfer of Property Act 1882, does not apply to pre-existing rights. Option C is the correct option. So this is very much easy. Pre-existing right is the correct option. Okay, people, you should know this section. And if you people have any doubt, do let me know below in the comment box and yourself prefer the Bare Act and books also Transfer of Property Act. अगर आपको sections, अगर आप Bare Act ढंग से पढ़ते हो, आप सारे sections, आप multiple choice question you people can easily do. You should know the crux of that particular section, what it is talking about.
You should know how to do the interpretation. See, interpretation करने में कभी difficulty होती है, then prefer the illustration. Illustration भी समझ नहीं आया तो book, prefer the book. Book से भी समझ में नहीं आ रहा, then ask to the respective one to whomsoever you want to ask, where you can get the answer of that particular question. So this is very much easy that everybody should prefer Barrett and they should read it properly. See, Barrett पढ़ोगे तभी आप book को भी समझ पाओगे. Book is the interpretation. Yeah, I prefer that book भी पढ़नी चाहिए साथ में. Yeah, definitely. For that you also should refer Barrett also. If you will be having the well knowledge of sections, then you can do every questions properly. Now, अगर आप लोगों को कोई भी doubt है मुझे बताओ, and please do like and subscribe my YouTube channel for more videos for and thank you so much.